Yes, that is what we have spoken about Ramasar. Ramasar is also the party to various international organization, partner to, like the Bird Life International. ये पूछ लेता है, right? Which of the following are the partners to Ramasar? ये बड़ा favorite topic है UPSC का Ramasar Convention, right? International Union for Conservation of Nature, IUCN. This is the international organization which helps in conservation of the wildlife species, right? It has created, IUCN has created a red list, right? According to that, IUCN has also created categories, 5 different categories of the presence of species according to the abundance of these species, right? So uska bhi party hai Ramasar Convention. International Water Management Institute, this is none, right? This started actually, International Water Management Institute started the conservation of water bodies, specifically waterfalls. Waterfalls क्या थे? Migratory water bodies जिन ponds में आके बैठते थे, उनके conservation को इसने start किया था. फिर वहां से वो रामासार कन्वेंशन का एक आइडिया बना है, ठीक है? तो ये पार्टी वेटलैंड्स इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, देन इंटरनेशनल वाइल्ड फॉल्ड एंड वेटलैंड ट्रस्ट, ये इसके साथ काम करता है, राइट? दीज ऑल आर द बेसिक पार्टीज टू द ऑर्गेनाइजेशन. Wetland Ramasar Convention also creates a list of wetlands which is called as Montrex Record. Montrex Record is the list of those wetlands which are currently in a particular state of highest deterioration, which requires an immediate effort for conservation, and immediate impact should be taken up for the preservation of such. These are being listed under Montrex Record, right? Montrex Report, where changes in the ecological character have occurred, are occurring, or are likely to occur as a result of technological development, right? Pollution or other international interference, it is maintained as a part of Ramasar list. Ramasar list is the list. Ramasar list is the list of all the wetlands. Under this, those which are at the highest priority are considered under Montrex Record, right? Other partners to this are Convention for Biological Diversity, which is the outcome of 1992 Earth Conference, right? जिससे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज बात किया था हमने, वो बना है. कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी उसी से बना था, राइट? रियो समिट से. और फिर इसी के आउटकम से हमने बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 बनाया, जो अभी हमने बात किया था ना, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमिटीज एक्सेट्रा बने, वो सब इसी के आउटकम से. कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, दिस इज आल्सो द आउटकम ऑफ दैट ओनली, रियो समिट. कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, इसको बॉन कन्वेंशन भी बोलते हैं, ठीक है? It is also party to that. Convention to Migratory Species, World Heritage Convention, Convention on International Trade in Endangered Species, which is CITES. CITES creates 3 different lists, 3 different appendices in which species are being listed from different countries, right? For reducing the trade in their bodies or live organisms also. Appendix 1 mein complete restriction is being given. Appendix 2 mein restrictions can be brought if the countries brought the notice to that. Appendix 3 mein no restriction is being given under CITES, right? And project funding is done by various groups like multinational organizations, developmental banks, bilateral donors, United Nations, UNEP, United Nations Environment Program, United Nations Development Program, non-governmental organizations, etc. These are all the funders of the Ramasar Convention. इसमें ही सारा इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन से ज्यादा बाहर आता नहीं, ठीक है? हाँ, सब इंटरनली अभी हम पढ़ेंगे, ये सब कहीं ना कहीं सब आएगा. अभी IUCN आएगा जब हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, और ये सब आएगा, इंटरनली भी आएगा, सब आएगा. The Ramasar sites as of 2023 there are 75, ठीक है, which are listed in India, right? The Ramasar sites in India, they are generally divided into 8 major groups. Number 1, the reservoirs of Deccan Plateau in the south, and together with the lagoons and the other wetlands of the southwest coast. Southwest coast, इस साइड के ये एक कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है? Then the vast saline expanses of Rajasthan, Gujarat and Gulf of Kutch, ये दूसरा ग्रुप है यहाँ पे, right? Then the freshwater lakes and reservoirs from Gujarat eastward through Rajasthan, Keoladeo-Gana National Park and Madhya Pradesh. This part specifically, ये वाला जो part है, this comes under the third group of the Ramasar Convention, Ramasar sites. Then the delta wetlands and lagoons of India's east coast, that becomes the Chilka Lake and all, ये वाला part जो है, उड़ीसा वाला, ठीक है? The freshwater marshes of Gangetic Plains and the floodplains of Brahmaputra, ये वाला जो part है, यूपी और इधर से बिहार और ये वाला part, right? The marshes and swamps of the hills of northeast India and the Himalayan foothills, ये वाला part जो यहाँ पे आपका लोकटक और ये सब आ जाता है, right? And the mangrove, the lakes and rivers of mountain ranges of Kashmir and Ladakh, this part, right? And the mangroves and the other wetlands of Andaman and Nicobar Islands, these, right? Of these, the important ones, if we look up to, starting from, सबसे important है ये सोमरीरी, नॉर्थ से ईस्ट में, नॉर्थ से साउथ अगर हम चलेंगे, सोमरीरी ये आपका लद्दाख में है, right? Then you have सोमरीरी के पास ही चंद्रा वेटलैंड है. ये सब हम डिस्कस करेंगे विद बायोडाइवर्सिटी आल्सो, डिटेल्स ऑफ दिस आल्सो. आपको लिस्ट पता होना चाहिए, बट इंपॉर्टेंट नेम्स पता होना चाहिए. नेम्स में बता दे रहा हूँ, जैसे मार्क कर रहा हूँ, सोमरीरी है, चंद्रा इज इंपॉर्टेंट. देन यू हैव वूलर लेक,
and Hokera wetland, ये important है यहाँ पे, right, which are in Jammu and Kashmir. Then पंजाब में आ जाओ तो नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भाखड़ा मंगल के साथ नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, that is important. Then you have this केशोपुर मिलानी कम्युनिटी रिजर्व, ये भी कुछ दिन पहले करंट में भी था, गोइंग टू डिफरेंट थिंग्स, राइट. और बेयास कंजर्वेशन रिजर्व, ये 3 पंजाब के इंपॉर्टेंट है. देन यू कम डाउन टू हरियाणा, हरियाणा में ये बिंदावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज इंपॉर्टेंट. देन यू कम डाउन टू राजस्थान, राजस्थान में केवला देवगाना, वी हैव स्पोकन अबाउट दिस, राइट, भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. देन यू हैव सांबर लेक आल्सो, सांबर एंड केवला देवगाना, बोथ ऑफ देम. देन इन गुजरात यू हैव दिस बदवा नेशनल पार्क एंड नाल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, दीज आर इंपॉर्टेंट वंस. देन इन मध्य प्रदेश recently added Bhoj wetland, भोपाल में है, right, and यशवंत सागर, ये भी recently added है, right. Then Maharashtra में you have this Lonar Lake and Thane Creek, these are 2 important ones. Then in Goa you have the Nanda Lake, in Karnataka the Ranganathu Wildlife Bird Sanctuary, that is important. Then in Kerala you have this Ashtamudi Lake of Kerala, this is important apart from others, right. Vembanad Coal wetland भी है, Ashtamudi ये Kerala backwaters के साथ बनता है. Then in Tamil Nadu you have this Pichavaram mangrove forest, पढ़ा है हमने, the largest mangrove forest of India, right, Gulf of Mannar. And then you have the, because Gulf of Mannar एक hotspot भी बन जाता है, biodiversity hotspot, तो एक important point है. Then you have these Vellode in Tamil Nadu, these are important ones. Then in Odisha you come down to Chilka Lake, well known salt water lake है, right. Then you have the Ansupa Lake, ये भी Ansupa Lake भी अभी कुछ दिन पहले current affairs में था, which is recently added. और Hirakud Reservoir, Hirakud Reservoir एक बड़ा Hirakud dam है उसमें, right. In West Bengal you have the Sundarbans, in Mizoram you have the Pala, in Tripura you have Rudra Sagar, Manipur में Loktak Lake, ये floating lake बन जाता है. Then in Assam you have the Deeparbir, right. Uttar Pradesh you have this one Sarai Nawar Jheel, which is important. Then this upper Haidarpur wetland in the upper Gangetic plains, Haidarpur ये आपके हरिद्वार और उसके उस तरफ वाले बेल्ट में आता है Haidarpur, right. ये सब important ones, these are the important ones which you can take up, right. लिस्ट है, इंपॉर्टेंट वंस मैंने आपको बताए, द नेम्स शुड बी देयर, बाकी डिटेल्स अभी हम डिस्कस होंगे, सारे डिस्कस होंगे विद द बायोडायवर्सिटी स्ट्रेच आल्सो, राइट. 11 new Ramsar sites have been brought in over here, like the Yashwant Sagar in Indore has been brought in, it was recently in 2022-23 it has been brought in. Ansupa Lake of Odisha, ये इसलिए important है. Then in the Chitraudi Wildlife Sanctuary in Tamil Nadu, this has been brought in, right. The Thane Creek of Maharashtra has been brought in, इसलिए मैंने आपको बोला उसको, important ones, right. These are certain ones. Then the Hirakud Reservoir of Odisha, these are recently brought in over here in the list, right. 11 of them has been brought in, right. Currently the basic major threats over the Ramsar sites in India also, if you look up to, majority of the threats in India are because of invasive and problematic species in India, right. Pollution is also one of the important part of it. Pollution of the wetlands and invasive species are creating major problems. Apart from this, the human intrusions, transport, climate change, energy production, geological events, human settlements and agriculture and aquaculture. These are 4 major things which are creating major problems to the Ramsar sites, right. These are major threats also of the Ramsar sites. What is the basic criteria that a particular wetland can be brought in into the Ramsar site? To be a Ramsar site, these are basic criteria. It must be a place which at least one of the criteria is defined, it is supporting vulnerable, endangered or critically endangered species or threatened ecological communities of these species, right. It should regularly support 20,000 or more water birds constantly, right. It is an important source of food or fish, spawning ground, nursery or migration path on which the fishes and other stocks they are dependent upon. Just at least one of these, or this or this or this or these, right. Static or flowing fresh or brackish or salt water including areas of marine water depth of which is low tide does not exceed 6 meters, जैसे ये जो चिल्का लेक और उसके साइड वाले हैं, केरला बैकवाटर्स के आसपास वाले हैं, ये सब बन जाते हैं. Does not include the river channel, paddy field, human made water bodies and tanks. It should be natural, it should not be anthropogenic, और river stream से बना हुआ नहीं होना चाहिए, right. All of these they are being taken. How a particular wetland is being governed or is being listed in the Ramsar site? First, the wetland identification, a brief document is being created, right. Then Ramsar site designation intent is being created by state governments and is being given to MOFCC, that is central government. The state government share the details of the Ramsar site and the proposal. Then approval is being given by MOFCC, which seeks approval from the external affairs ministry. Upon approval, MOFCC, which is Ministry of Environment, Forest and Climate Change, sends it to the Ramsar Secretariat. Ramsar Secretariat allots a site ID and password to access the Ramsar information, site information, right. Then a proposal preparation is being created. Ramsar site compiler is prepared. Ramsar compiler upload the map of in the prescribed format to Ramsar Secretariat, right. And proposal review and finalization.
State government to electronically forward all the finalized report to MOFCC. MOFCC sends it to Ramasar Secretariat. Ramasar Secretariat shares the comments with the MOFCC. Comments to be addressed by compiler and site is designated, and then the final proposal is processed by Ramasar site. तो simple state government से central government से Ramasar Secretariat फिर approval. ये सब चीजें इसका basic process है. This is how a particular site can be identified as a Ramasar site in India, right? Right. So these all things are taken up for the conservation of the lakes and the wetlands in India. Then if we speak about the river basins, specifically river basins in India, Ganges, Yamuna, Narmada, Krishna, Kaveri, Godavari. These are major stretches of the river. Apart from this, the three major rivers of the Himalayan origin, right? Beas, Ravi, and Satluj. These three major rivers of the Himalayan origin. Majority of these, they are Brahmaputra stretch, right? These majority of the rivers are not polluted in the upper stretches because of the high flow rate of the river. Number one. Second, because of the comparatively lesser developmental activities or technological development in these areas. Although production of dams and other natural calamities like the flash floods in these areas, landslides in these areas are increasing the sedimentation in the upper stretches of the river, then too the rivers are comparatively less polluted in the upper stretches. The major pollution of the rivers, be it be Ganges, be it be Yamuna, also Narmada, also Mahanadi and Kaveri, they are getting polluted because of the developmental activities in the middle stretches of the river. That includes development of the dams, which decreases the flow rate of the rivers, increases sedimentation of the rivers, then the agricultural runoff in the rivers in the middle stretches, then the industries which directly emit their pollutants in the rivers itself. These are major sources of pollutants, right? And then the urban dump yards which are being created in the main channel of the river is the foremost problematic thing, right? Like for example, you take an example of Yamuna. Yamuna is not polluted up to Haryana. As it enters Delhi, it is highly polluted river. And post Delhi, it is completely a sewer tank only, a sewer channel only, right? In Agra, Mathura, Agra, and other stretches of the Uttar Pradesh through which the river flows, the water is highly polluted. And that pollution is because of much amount of the sewage which is being dumped in Delhi itself. That happens with Ganga also. Ganga remains most polluted between Varanasi and Bihar, Muzaffarpur and Bihar, because of release of chemicals from the unidentified industries also, unregulated industries also, and non-compliance of the Water Prevention and Control Act in the emissions of the major industry. Because majority of the Kanpur के आसपास देखो जितना cottage industry of leather है पूरा tanning project गंगा में छोड़ देते हैं. बनारस आते आते तक all the religious waste is being dumped, dead bodies are being dumped, ashes are being dumped. उससे आगे जाओ बिहार पहुंचते पहुंचते all the agricultural waste is being dumped in Ganga, and Ganga is most polluted in Bihar. Near the delta, it becomes the highly polluted river in the country. Right? So Ganga pollution, if you look up to, there are multiple sources. Organic waste, sewage, industrial waste, trash, polythene, cans, clothes, foods, and human dead bodies. These are all the major products of major types of the pollutants in Ganga itself. Right? And the major reasons, if you look up to, urbanization, rapid industrialization, rising standards of living. So we are not caring about the resources as such, or the consumption patterns have changed. Exponential growth of the population, which is putting a large pressure over the rivers itself. And the urbanization, the faster urbanization has created abrupt urbanization has created a structure where the infrastructural development for the removal of the waste is not being done, and these all waste goes into the river streams itself, right? Majorly it causes the waterborne diseases, leading to 80% of the health problems in 1/10 of the population itself, right? Sources are point sources and the non-point sources in Ganga. The point sources are industrial waste and the municipal sewage. These are largest, right, which comprises of liquid effluents containing pesticides, DDT, bleaches, heavy metals, ammonium sulfide, the halides, PCBs, right, salts, cyanides, etc. They are all being dumped as liquid effluents in the river itself. The municipal sewage contains organic, nutrient, and the coliform structures, right? The organic matter. The non-point sources, which include the runoff from the rural settlement, fertilizer and pesticide from the agricultural fields, the open defecation, dumping of animal carcasses, the dead bodies, disposal of the dead bodies, floral offerings, solid waste, dhobi ghats, cattle wallowing, mass bathing, all of these, they attribute to the non-point sources of the pollution in Ganga, right? Industrial waste also come from food processing, fertilizer manufacturing, pharmaceutical company, electroplating, battery manufacturing and battery recycling in these areas, textile, tanneries in Kanpur and all that, right? Leather tanning, oil refineries, sugar and distilleries, etc. They all come from the industrial waste, right? And in the ceremonial wood pyres, bodies thrown into this, which creates the organic matter dumping, right? 40,000 cremations are being performed annually in Varanasi, and the ashes are being dumped in Ganges itself. Partially unburned bodies are also being thrown directly into Ganges, right? This leads towards a higher pollution. Ganges is just an example of it. Majority of the rivers are polluted because of the same idea, right? Yamuna ke case mein
नॉन पॉइंट सोर्सेज गंगा के केस में नॉन पॉइंट सोर्सेज बढ़ जाते हैं, यमुना के केस में पॉइंट सोर्सेज बढ़ जाते हैं, इंडस्ट्रियल एंड द म्युनिसिपल सीवेज, राइट? So there are multiple efforts which have been taken also. Like if we look up to the various efforts, the National River Conservation Program has been taken up for the conservation of the rivers. But before that, for the conservation of the rivers, we have taken Ganges as the basic model scheme. We started conserving Ganga, and in doing so, we created various things. Like for example, Ganga Action Plan was created towards conservation of the Ganga, right? Ganga Action Plan was launched in 1985. The focus was the mainstream of the Ganga. 25 towns cover and 260 schemes were completed, but then too Ganga was not clean by Ganga Action Plan 1. So we came up with extended Ganga Action Plan 2 in 1993, which merged with national river conservation policies also, right? And in 1996 and taken up 4 tributaries: Yamuna, Gomti, Damodar and Mahanad, right? Mahanadi in fact, Mahananda. Then in 1995 National River Conservation Program was launched, covering 41 major rivers of the country. गंगा एक्शन प्लान एक तरफ चल रहा था, एक तरफ यमुना एक्शन प्लान आया, बाकी 41 रिवर्स को हमने कवर करने के लिए नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम बनाया 95 में। स्टार्ट कहां से हुआ? 85 से। पहले गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट हुआ, फिर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम हुआ। 8 गंगा बेसिन रिवर्स बेतवा, चंबल, गंगा, महानंदा, मंदाकिनी, रामगंगा, यमुना वर ब्रॉट इन अंडर दिस, ठीक है? यमुना एक्शन प्लान को क्लोज करके इसके अंदर बना दिया। देन गंगा को कंजर्व करने के लिए वी क्रिएटेड नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, व्हिच वाज इन 2009. Separate authority was created, chaired by Prime Minister of the country. National Mission on Clean Ganga was implemented, right? And center and state protection agencies were brought in over here for conservation of the Ganga. This is the basic timeline. फिर उसके बाद जब इन सब से कंजर्वेशन नहीं हुआ, क्लीन नहीं हुई, तो फिर नमामि गंगा योजना लेके आए 2014 में. All 11 basin states were covered in this. Conservation methods for all the tributaries of Ganga was taken up, right? This is the basic outline how we have conserved the overall rivers in the country. Now we'll look up to various different things that we have that has been taken up in detail. Right, the first one, National River Conservation Plan, right, which was brought in 1995 for conservation of 41 rivers, excluding those in the Ganga basin. It was a centrally sponsored scheme, right? Abatement of pollution was the foremost objective, right? It was in the state of all the states and union territory except Jammu and Kashmir at that time, right? The basic objective was interpretation and diversion works, laying sewer systems, right? Capture raw sewage flowing into the rivers and open drain, diverting them to treatment. This was the first thing. Municipal sewage directly जा रहा था rivers में, उसको cut down करना. Setting up sewage treatment plants. This is the foremost thing, because by that time we had the industry, we had the municipal corporation, but not the efficient sewage treatment plants. 1995 onward. 1995 National River Conservation Plan, right? Construction of the low-cost sanitation toilets to prevent defecation in the riverbeds, right? Construction of electric crematorium, riverfront development such as improvement of the ghats and public participation for the awareness, right? This was all the basic objective of National River Conservation Program. Under this, major rivers like the Beas, Bhadra, Kaveri, Ghaggar, then Godavari, Krishna, Mahanadi, then Pennar, Pamba, Sabarmati, Satluj, Suvarnika, Tapi, Tapti, Tavi, all these major rivers, they were all Tungabhadra, Velnar, Vainganga, etc. They were all brought in. Then Narmada और फिर उसके आसपास के tributaries, they were all brought in over here in the National River Conservation Program, NRCP. Then for the conservation, so basically we are trying to, the three major things we are trying to do with cleanup of the river. Number one, cut down direct dumping of the waste into the sewage into the river, industrial effluent into the river, set up effluent treatment plants or sewage treatment plant. Municipal corporation के लिए sewage treatment plant, for industries the effluent treatment plants. ये basic objective था, 95 में बनाया. लेकिन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स कितने बने? मेजर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स ने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स ही नहीं बनाए. अब अगर जैसे मेजर रिवर्स के आसपास के हमारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को देखोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल क्लस्टर आगरा से शुरू होता है, मथुरा, आगरा, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स एफिशिएंट नहीं अभी भी टिल डेट, ठीक है? गंजेस की हम बात करें, यमुना की बात करें, फिर उसके बाद आ जाओ कानपुर, वाराणसी, ऑल दीज एरियाज, देन टू एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स वर नॉट वेरी एफिशिएंट. गंगा एक्शन प्लान आ जाने के बाद भी वाज नॉट एफिशिएंट, राइट? एफ्लुएंट ट्रीटमेंट हो ही नहीं रहा था. एफ्लुएंट ट्रीटमेंट होता कैसे है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज द एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, राइट? Then sewage treatment by the municipal corporation was not taken up till 2014. Only 27 sewage treatment plants were working all over India. ठीक है? खास तौर पे स्पेसिफिकली गंजेस में it was only 16 sewage plants, गंजेस बेसिन में, बाकी तो और थे ही नहीं. ठीक है, वर्किंग की बात कर रहा हूं, बनाए लेकिन वर्किंग नहीं थे. फिर वो इंक्रीज करके 56 पे गए, अभी इंक्रीज करके 97 पे आए आफ्टर ऑल दिस. सो the sewage treatment plant and setting up of the sewage treatment plant and diversion of the sewage channel is foremost problematic thing as far as the river conservation is concerned, right? Chalo, now we look up to how Ganga
conservation or the rejuvenation of Ganga has taken place. This is always a question. Ganga Action Plan. It has been taken up in two major phases. Ganga Action Plan of 1985, 1993. Right? Phase 1, Phase 2. In Phase 1, we have brought in a 350 crore budget for conservation of the Ganga, for diversion of the channels, for making upper Ganga canal systems also, so that water can be diverted to other areas also, reducing sewage in Ganga. That was the major objective. Right? And establishing municipal waste treatment plants was also the objective over here. 35% of the sewage generated was tackled in Ganga Action Plan. Right? Biochemical oxygen demand came down from 12 milligram per liter to 4 milligrams per liter. और ये सब अपर स्ट्रेच में ही था, मिडिल स्ट्रेच में नहीं हुआ गंगा एक्शन प्लान में. मिडिल स्ट्रेच वैसा ही पोल्यूटेड था. सोचो अपर स्ट्रेच वैसे ही कम पोल्यूटेड होता है, वहां पे गंगा एक्शन प्लान काम किया, अपर गंगा कैनाल बना दिया, हमने ट्रीटमेंट कर दिया. ठीक है, यहाँ गंगा जो मिड ऑफ द गंगा है वहां पे काम नहीं हुआ. ठीक है, गोमती और इसके आसपास की जो गंगा है वहां पे गंगा एक्शन प्लान में काम नहीं हुआ. ओनली 35 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वर बिल्ट. राइट, 35 वर बिल्ट. उसमें ऑपरेशनल बहुत सारे नहीं थे, बहुत सारे ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहे थे. राइट. फेज 2 85 से 93. इट वाज फ्रॉम 1985 टू 1993. 1993 में वी ब्रॉट इन द गंगा एक्शन प्लान फेज 2. 2009 तक चला, जब तक नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी में. ठीक है, गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनी तो क्लीन गंगा मिशन आया. ठीक है, it was at the cost of 1498 crore rupees. Right, 60% of the sewage generated was tackled. वहां 35 से बढ़ के हम 60% तक आ गए. Right, biochemical oxygen demand remained static, 4 milligram per liter पे था, क्योंकि वो जो मेजर स्ट्रेस था वो वहां पे भी बहुत सारा काम अभी हुआ नहीं था. Right, 63 STPs were built, 35 से 63 पे आ गए हम लोग. Right, इसमें मेजरली these were built in उत्तर प्रदेश एंड बिहार. वेल नोन पटना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना शुरू हुआ था इसमें, और बन के खत्म हुआ है नमामि गंगे योजना में. राइट, 1993 से बनना शुरू हुआ था और बन के खत्म हुआ है 2016 में. ठीक है, बड़े उससे बताया था कि पटना में आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन गया. इमेजिन दिस कैपिटल ऑफ द स्टेट इटसेल्फ. मैं तो और जगह पे क्या कंडीशन हो. So eventually phase 1 and phase 2 of Ganga action plan was not very successful. We would not say it was successful. It was because it was not able to cut down pollution in Ganga. So we came up with Namami Gange Yojana, Namami Gange program, in fact, right? National Mission for Clean Ganga, Namami Gange, or it was also an integrated Ganga conservation mission for Ganga regeneration, development of ghats, beautification of the river fronts. That came up. Namami Gange approaches Ganga regeneration, right, by consolidating the existing ongoing efforts जो Ganga action plan में 2 में चल रहा था उसी को करना. Right, preparing a concrete action plan for future. Right, interventions of ghats and river points to facilitate better citizen connect and set the tone for river centric urban planning process also. Futuristic river uses को develop करना was the basic objective. In the Namami Gange, which was in 2014, it was brought in. इसके पहले between 2009 to 2014 we had the National Mission for Clean Ganga, right, which was then brought in under National Ganga River Basin Authority. ठीक है, ये ऑटोनोमस बॉडी था which was chaired by प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, इसके थ्रू गंगा एक्शन प्लान फेज 2 को ही एक्सटेंड किया था हमने. बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? गंगा एक्शन प्लान 2 को एक्सटेंड करना. राइट, तो 93 से 2009 तक वी हैड दिस. इन 2009 वी क्रिएटेड NGBR चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर. राइट, और गंगा एक्शन प्लान को आगे बढ़ा रहे थे उसमें टू क्लीन अप रिवर गंगा इन दी मिडिल स्ट्रेचेस. ठीक है, लेकिन वो क्लीन अप हुआ नहीं. जब वो हुआ नहीं तो फिर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को ही सेंटर में रख के एक अम्ब्रेला रैप दे दिया, एक रैपिंग मिशन बना दिया, व्हिच बिकेम दी नमामि गंगे प्रोग्राम. ठीक है, नमामि गंगे प्रोग्राम से NGBR डिसलॉज नहीं हुआ था, ना ही NMCG डिसलॉज हुआ, व्हिच इज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. लेटर इस सबको मर्ज करके एक नया प्रोग्राम बनाया. राइट, तो बेसिक things that were taken up under the Namami Gange Yojana is the comprehensive integrated program. It is not only about state, it is not only about center. We must create an integrated mission, right? कि गंगा को क्लीन करना, वो चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो. राइट, वो एक प्रॉब्लम था क्योंकि गंगा एक्शन प्लान में सेंटर पुश तो करता था लेकिन स्टेट्स करते नहीं थे. ठीक है, बेसिकली क्या होता था कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लान के लिए पैसा दिया, अब सेंटर स्टेट फाइनेंशियल कमीशंस के थ्रू ही पैसा मिलता था. राइट, फाइनेंशियल कमीशंस कहीं ना कहीं नेगोशिएट करते थे, तो कुछ ऐसे पॉलिसीज के लिए पैसा नहीं मिलता था, इसके लिए पैसा मिल जाता था, ये पैसा डाइवर्ट करके वहां लगा देते थे, बोलते थे सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बन रहा है. राइट, तो द एक्चुअल एक्शन वाज नॉट टेकन ओवर द गंगा एक्शन प्लान. राइट, 100% सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम वाज क्रिएटेड अंडर नमामि गंगे. उनसे बोल दिया कि आप रहने दो, आपका जो पैसा हम आपको दे रहे थे वो आपको देंगे नहीं, आपका पैसा हम ही यूज करेंगे. राइट, सो अ टास्क फोर्स वाज आल्सो क्रिएटेड अंडर नमामि गंगे योजना, व्हिच वुड. SPCB तो सिर्फ रेगुलेटरी है ना, इंप्लीमेंटिंग था. स्टेट गवर्नमेंट को बोलेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को बोलेगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ, वो बोल देगा हाँ बन रहा है, गंगा एक्शन प्लान के थ्रू बन रहा है,
बनेगा ना, काम करेंगे, तब तक क्या करें? तब तक तो एमिशन करोगे ना, तब तक फ्लुएंट करोगे। इंडस्ट्रीज पे रेगुलेशन लगा देता था, हैवी इंडस्ट्रीज पे, लेकिन जो अनकैटेगराइज्ड इंडस्ट्रीज थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे या कॉटेज इंडस्ट्रीज थे, उस पर रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाता? क्लस्टर पे कैसे लगाता? अब एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, उस पर तो लगा देगा जो ऑर्गेनाइज्ड है, जो अनऑर्गेनाइज्ड है उस पर रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाएगा एसपीसी? क्या करते थे? जाते थे, टास्क फोर्स भेजते थे, ऑब्जेक्टिफाई करते थे, कुछ दिन के लिए इंडस्ट्रीज बंद हो जाती थी, फिर से खुल जाती थी, राइट? तो प्रॉब्लम थोड़े दिन के लिए सबसाइड होता था, फिर स्टार्ट हो जाता था। वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तभी नमामि गंगा योजना में दे क्रिएटेड अ टास्क फोर्स, अ नेशनल लेवल टास्क फोर्स। उस टास्क फोर्स का काम ही यही था, लुक इनटू द pollution causing mechanism or look into the pollution causing sources and immediately turn off these sources, right? Initially तो जब ये नमामि गंगा योजना बनी थी ना, तो उस समय पे जो मिनिस्टर थी उमा भारती, तो उन्होंने बोला था कि मैं तो बस 3 साल में गंगा को क्लीन कर दूंगी। तो उन्होंने जितनी इंडस्ट्री थी सबको बंद कर दिया, एमिशन ही रोक दिया। अब ये भी नहीं चल सकता, यू कैन नॉट कट डाउन इंडस्ट्रीज इन दी स्टेट्स, राइट? सारे इंडस्ट्रीज पे बहुत फाइन लगाए, सबको बंद कर दिया, सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर जाकर सारे लोग मिलके प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच गए, ये इंडस्ट्रीज बंद कर दोगे तो कैसे होगा? तब उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया कि भाई आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाओ या कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाओ, जब तक नहीं बन रहा तब तक हम आपको परमिट करते हैं, लेकिन टाइमलाइन के अंदर आप बनाओ। ऑल ऑफ दीज इट स्टार्टेड, राइट? हाइब्रिड एन्युटी बेस्ड पीपीपी मॉडल अडैप्टेड। ये पीपीपी मॉडल किस लिए था? कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने के लिए या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाएंगे इन सिटीज। अभी तक क्या था? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ एक बड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑब्जेक्टिव था। जो बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसमें 15 लाख या उससे ज्यादा का पॉपुलेशन किसी एक एरिया में है, तो उसको एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना मैंडेटरी हो गया था। अब वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दो तरीके से काम करता था, एक तो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी साथ में होता था और सीवेज ट्रीटमेंट भी साथ में होता था, राइट? लेकिन स्मॉलर सिटीज के लिए जिनकी पॉपुलेशन 15 लाख से कम है, उनको कोई कंपल्शन नहीं था, वो तो अपना पूरा सीवेज निकाल ही रहे थे। विलेजेस के लिए कंपल्शन नहीं था। यहां पे नमामि गंगे में क्या किया? नमामि गंगे अर्बन और नमामि गंगे रूरल भी बनाया। क्या बोला? एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाओ फॉर अर्बन क्लस्टर्स। अर्बन है तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाओ, जहां पे नगर पालिका है वहां पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, और जहां नगर पंचायत है या ग्राम पंचायत है वहां पे एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाओ। मतलब 3-4 विलेजेस का क्लस्टर बनाओ, उनके बीच में एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाओ, 50 किलोमीटर की रेडियस के लिए एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाओ, देन यू आफ्टर यू ट्रीट देन यू लीव इट, राइट? ये नमामि गंगा योजना से स्टार्ट हुआ। दिस वाज मेजरली इन द विलेजेस व्हिच आर प्लेस्ड नियर गंगा बैंक्स, राइट? So, and a 5 years dedicated budget allocation was taken up, right? And 15-year OEM cost was also taken up. अब अभी होता क्या था? इसके पहले गंगा एक्शन प्लान 263 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आपने बना लिया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों? तो कुछ दिन चलते थे, खराब हो जाते थे, फिर उसके बाद ओवरहेड कॉस्ट ही नहीं थी। जब ओवरहेड कॉस्ट ही नहीं थी बजट में, भाई आपको सिर्फ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए सेंटर ने बजट दिया, आपको ऑपरेट करने के लिए बजट ही नहीं दिया, ठीक है? और वो इकोनॉमिकली वायबल तो है नहीं कि उससे कुछ पैसा मिल रहा है। अगर उससे कुछ पैसा मिल रहा था तो उसी से कॉस्ट रिकवर कर लेते थे। अब अगर खराब हो गया तो उसको सही कराने के लिए फिर से सेंटर के पास फाइल, फिर सेंटर बजट एलोकेट करेगा, फिर वो सही होगा। तो बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बने, बट दे वर नॉट फंक्शनल। पता है ना, जैसे जब नमामि गंगा योजना बना था तो ओनली 27 ऑफ देम वर फंक्शनल, रेस्ट ऑफ देम वर आइदर अंडर मेंटेनेंस, नॉट फंक्शनिंग, नॉट वर्किंग। तो अल्टीमेट प्रॉब्लम वाज द पोल्यूशन ऑफ द रिवर। So under this, overhead and maintenance cost for next 15 years is also covered. नमामि गंगा योजना, नमामि गंगा योजना ने बेसिकली उन्हीं चीजों को फुलफिल किया जो गैप्स थे गंगा एक्शन प्लान के इनिशियली, और थोड़ा सा उस प्रोग्राम को, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को फासन अप कर दिया। सिर्फ यही किया इस पॉलिसी में। A 5-tier structure is now being created under Namami Ganga Yojana, right? Under this, we have the National Ganga Council now, which is chaired by the Prime Minister of India, right? Then we have the Empowered Task Force for River Ganga, right? Which is chaired by the Union Minister of Jal Shakti, right? Then we have the National Mission for Clean Ganga under this. National Mission for Clean Ganga is जो गैप का एक्सटेंडेड पार्ट है। गंगा एक्शन प्लान 2 बाद में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा बन गया, ऑब्जेक्टिव वही है, वो सब उसको चेयर कौन कर रहा है? मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। उसको ओवरलुक कौन कर रहा है? द प्राइम मिनिस्टर, राइट? देन अंडर दिस द इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज आर द स्टेट गंगा कमिटीज। जिन जिन स्टेट्स में 11 बेसिन स्टेट्स हैं, तो 11 बेसिन स्टेट्स में वी हैव द गंगा कमिटीज एंड द डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज आर आल्सो बीइंग क्रिएटेड, राइट? सो अंडर दिस नाउ द गंगा रिजुनोवेशन वुड बी टेकन अप बाय 4 मेजर थिंग्स। वन इज निर्मल गंगा, right? Nirmal Ganga would be reducing the solid waste coming directly into river. Then sewage infrastructure is to be created. There must not be any leakage of the sewage. Industrial pollution is to be tackled, right? Wastewater reuse and recycle is to be initiated through sewage treatment plant and effluent treatment plants itself. And rural sanitation is also being taken up. So rural sanitation के लिए open defecation free villages बनाए,
थ्रू स्वच्छ भारत मिशन टॉयलेट्स बनाए इन द रूरल एरियाज, ओपन डेफिकेशन कंप्लीटली रिड्यूस कर दिया, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज फ्रॉम द विलेजेस वाज टेकन एज द बेसिक आइडिया, राइट? देयर मस्ट नॉट बी एनी डिस्चार्ज, इट मस्ट गो इनटू अ कॉमन सीवेज व्हिच मस्ट बी ट्रीटेड, right, either by nagarpalika or by gram panchayats. That is to be taken up, right? Aviral Ganga is where small river regeneration, all those rivers which are tributaries to Ganga, they must also be regenerated. Aviral Dhara, constant flow, the flow of the river would be constantly monitored, right, through various technological methods. Wetland mapping and conservation of the wetlands in the Ganga river basin. Floodplain protection, the complete watershed is being protected for the Ganga river. Sustainable agriculture and afforestation and biodiversity conservation is being taken under Aviral Ganga. ये गंगा रिजर्वेशन का ही पार्ट है. देन यू हैव जन गंगा, ये सब किसके अंदर आ रहा है? नमामि गंगे के अंदर ही आ रहा है. ठीक है, नमामि गंगे का एक पार्ट क्या है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो क्लीनिंग के लिए काम कर रहा है. फिर उसका दूसरा पार्ट क्या है? ये 4. ठीक है, काम कौन कर रहा है उसके लिए? नेशनल गंगा काउंसिल. ठीक है, एनजीबीआरए हमने जो बनाया था, एनजीबीआरए बेसिकली 2017 में हमने खत्म कर दिया. नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, उसको खत्म करके हमने नेशनल गंगा काउंसिल बनाया 2017, चेयर कराया, और गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को बेसिक काम दे दिया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का. दिस इज एट द सेंट्रल लेवल ओनली, दिस इज एट द सेंट्रल लेवल, दिस इज एट द सेंट्रल लेवल ओनली, दिस इज एट द स्टेट, दिस इज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, राइट? देन जन गंगा, this is a kind of awareness campaign where Ganga Utsav are being created, Ganga Amantran rafting expeditions are being created, Ganga Run, community engagement, riverfront and ghat crematoria management, etc. are being done, so that on the front face itself the awareness is being brought in and people are more participating towards Ganga conservation. And Gyan Ganga, the urban river management plan is being created over here. Water quality monitoring is being taken up constantly by CPCB. High resolution mapping of Ganga through LIDAR. LIDARs are the light based mapping instruments, right? Then microbial diversity, aquifer mapping, cultural mapping, this has all been done technologically to constantly monitor the state of Ganga, right? सिर्फ pollution reduction नहीं है, overall management of Ganga is being taken up under the Namami Gange Yojana. ठीक है, ये समझ में आया क्या था? सबसे पहले गंगा एक्शन प्लान, फिर उसके बाद गंगा एक्शन प्लान 2, फिर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 2009 में, फिर उसके बाद नमामि गंगे. नमामि गंगे के अंदर ही नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा आ गया, राइट? और नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बना था 2009 में, जो 2017 में फिर कन्वर्ट हो गया इनटू नेशनल गंगा काउंसिल. नेशनल गंगा काउंसिल को चेयर किसने किया? प्राइम मिनिस्टर ने किया, और उसके अंदर एनजीबीआरए भी आता है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट भी वहां पे काम करती है. साथ में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति काम करती है टू क्रिएट अ टास्क फोर्स. दिस टास्क फोर्स विल हेल्प इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ नमामि गंगे. ठीक है, क्योंकि वो वाटर रिसोर्स में आ गया अब उसको. ठीक है, अब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उसके अंदर जो क्लीनिंग ऑब्जेक्टिव है, और फिर स्टेट गंगा कमिटीज और डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज इंप्लीमेंटेशन में काम करते हैं. There are 7 thrust areas and 21 actions which are being taken under Namami Gange Yojana. The first one is the wholesome river, which determines and maintains the environmental flow of the river. There must not be any obstruction. If there is sedimentation, that must be removed, right? Then clean river, 2, 3, 4. Upgrade existing sewage treatment plants. If there are no sewage treatment plants, then create a new sewage treatment plant also. Creating additional sewage capacity, industrial pollution abatement. This has been taken up. Then development of the Ganga Grams. Ganga Gram Yojana is all those villages which are in the banks of the river. They must not have any kind of the discharge directly into the river Ganga, right? Zero liquid discharge into the river Ganga. Open defecation free villages are to be created, right? Direct disposal of the organic waste, domestic waste, religious waste, dead bodies from these villages is completely restricted and prohibited under Ganga Gram Yojana. Plus the Gram Panchayat, the basic head of the Gram Panchayat is then being created as the Ganga representative, right? Ganga representative, right? Ganga Jal Pratinidhi, right? So that the basic representative of the Gram Panchayat itself is working towards cleaning up of the river, right? Managing agricultural runoff also in these areas, so that the agricultural runoff can be brought into a pond, right? अभी आइडिया क्या है? एक पॉन्ड में लेके आओ, पॉन्डेज में लेके आओ, आइदर उसको स्टोर करके रखो, रीयूज करो, या फिर उसको कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटी की तरफ भेजो, right? Development of model Dhobi ghats, so that there are no direct disposal of the waste into the river. Creating model crematorium ghats also, right? That has been taken up. Then riverfront development, where overall ghats and their riverfront development has been taken up, so that erosion of the riverfront is not being done, right? The banks, right? Then public amenities and urban and rural centers for the over the river bank, right? Toilets specifically near the river banks and ghats. Ganga task force has been created under this so as to overlook all these things. There is no pollution directly into river Ganga. That has been taken up. Then capacity building for futuristic uses, creating the proposals and new projects for the upcoming users of the Ganga also. Then research and monitoring, GIS and spatial planning is being done. Research project, National Ganga Monitoring Center has also been established now under National Mission for Clean Ganga only, right? Under the National Ganga Council only it has been established for technological monitoring of the
रिवर गंगा, जो हमने देखा था ना ई गंगा बन रहा था, और ये वाला जो प्लान है ज्ञान गंगा, वो इससे आए, राइट. National Ganga Institute for River Sciences, this is also now been upgraded. Then protection of the aquatic flora, afforestation, etc. Conservation of the diversity of the national Gangetic aquatic life, etc. Specifically, Gangetic dolphin is being taken up as the keystone over there, right? Then awareness creation, Ganga Vahini, communication and public outreach activities, all of these they have been taken up for Ganga regeneration, right? Aviral Dhara, Nirmal Dhara, and all these are being taken up for the overall implementation of the Namami Gange. So हमने क्या किया है, सिर्फ गंगा एक्शन प्लान को और बड़े फॉर्मेट में लगा दिया, बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट कर दिया. इट इज नॉट ओनली अबाउट अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन नाउ, इट इज कंप्लीट कंजर्वेशन ऑफ द रिवराइन इकोसिस्टम. दैट इज हाउ इट हैज चेंज्ड. व्हाट हैज चेंज्ड फ्रॉम गंगा एक्शन प्लान टू नमामि गंगे योजना इज जस्ट द इंप्लीमेंटेशन मेथड. इन गंगा एक्शन प्लान वी वर ओनली लुकिंग ऑन टू वन एस्पेक्ट, दैट वाज अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, removal of sewage, right? Now we are considering it as an ecosystem, right? So we are trying to conserve the complete ecosystem, the riverine ecosystem in Namami Gange Yojana. That has changed, right? Long-term Ganga River Basin management plan has been created, where Aviral Dhara, geological entity, ecological entity, Nirmal Dhara, they would all be taken up through these sustainable agriculture, disaster protection, environment knowledge building, geological safeguarding, and ecological restoration. Overall ecosystem management is being taken up. 36 thematic reports have been brought in. Comprehensive measures for restoration, Aviral Dhara, Nirmal Dhara, recycling, reuse of the resources, zero liquid discharge in the villages, that has all been taken for the futuristic uses. So how it has changed? Namami Gange and the previous plan, that may be Ganga Action Plan 1 and 2, or the National Mission for Clean Ganga, right? It has a budget of 20,000 crores, which is now exceeded, which is now improved to 48,000 crores also in 2023, right? 1,848 crore rupees. So we are spending more for the conservation of the ecosystem. It has launched 155 new sewage treatment plants. It had only 63, right? 35 sewage plants across the states and 35 to 63 kiya tha, right? Laid stress on building the crematoriums, toilet across Ganga villages and towns. So now villages and the tier B and tier C cities are also being brought in across Ganga, which were not spoken of in Ganga Action Plan and Ganga Action 2 itself, right? Then headed by National Mission for Clean Ganga, NMCG, right now, which is then headed by National Ganga Council. It was headed by NGBRA, right? Involved the states in planning and monitoring, did not involve the states, right? Have a realistic deadline of 10 years, although 10 years पहुंच गए हम 2024 में. अभी there are many things which are still to be done. It has an ambitious deadline of 6 years. Initially Ganga Action Plan 1 तो सिर्फ initially था, 93 में जो बना उसमें गाइडलाइन थी 6 साल की, 1999 तक. कुछ नहीं हुआ तो 2005 तक, फिर कुछ नहीं हुआ तो 2009 तक, फिर 2009 में आके समझ में आ गया कुछ हो ही नहीं रहा है गंगा एक्शन प्लान, फिर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा बना, right? The second river which is of the problem right now is Yamuna. ठीक है, यमुना में अगर हम देखेंगे then itself in Delhi NCR the maximum pollution of Yamuna takes place, right? अभी देखो यहाँ पे ये हथनीकुंड बैराज है जहां पे हम वाटर को स्टोर करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर द यूज ऑफ वाटर इन दिल्ली एनसीआर. ठीक है, सो मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रीम इज डाइवर्टेड ओवर हियर, right, which then goes to Tajewala barrage and eastern Yamuna canal and then crosses across Delhi NCR. ठीक है, वाटर यूजेस यहाँ पे हो जाते हैं. तो उससे क्या होता है, जो मेन स्ट्रेच ऑफ द रिवर है उसमें वाटर बहुत कम रह जाता है, right? This is only diverted, majority of the water is diverted to this stretch only when there is a flood like condition. Otherwise इसको यहाँ से डाइवर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, एनसीआर में, और इसी हथनीकुंड बैराज से मेजॉरिटी ऑफ द वाटर इज बीइंग गिवन, राइट, इन दिल्ली एनसीआर. 40% ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर इज बीइंग सप्लाइड फ्रॉम हथनीकुंड बैराज, राइट. फिर क्या होता है, ये एंटर करती है एनसीआर में फ्रॉम यमुनानगर. ठीक है, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, ये आ गया यहाँ पे ओखला बैराज. ओखला बैराज में सबसे पहला एक सीवर आके गिरता है इसमें, which drains off all the waste from the southern and south eastern Delhi. ठीक है, फिर वो सब यमुना में गिरता है, यमुना स्ट्रेच में, अपर स्ट्रेच में. फिर यूट्रोफिकेशन यहाँ पे पूरा स्टार्ट हो जाता है ओखला के आसपास. फिर 3 बैराजेस और है जो यहाँ सोनीपत के, ये वजीराबाद बैराज है जो ओपन होता है, ओखला बैराज है, और यहाँ पे आकर के एक और निजामुद्दीन बैराज है, ये पास में ही, राइट, हजरत निजामुद्दीन, ये इसके पास यहाँ पे खुलता है. ये तीनों पूरा पोल्यूशन दिल्ली का मेजॉरिटी ऑफ द अनट्रीटेड वेस्ट इज बीइंग देन डंप्ड इनटू यमुना. फिर यहां से ये कैनाल आगे डिस्ट्रीब्यूट करके यमुना रिवर में मिल जाती, कहां, मथुरा से ठीक पहले. लेकिन उसमें क्या होता है, वाटर, फ्रेश वाटर एंड द सीवेज, बोथ ऑफ इट इज मिक्स्ड, एंड एट मथुरा एंड आगरा स्ट्रेचेस मेजॉरिटी ऑफ द यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन यमुना. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यूट्रोफाइड स्ट्रेच हो जाता है मथुरा से यहां तक. इटावा पहुंचते पहुंचते तक रिवर कंप्लीटली यूट्रोफाइड हो जाती है. इलाहाबाद में जब ये गंगा में मिलती है उस समय पर कंप्लीटली येलोइश ग्रीनिश वाटर इनफैक्ट होता है जो यूट्रोफाइड वाटर के फॉर्म में होता है, राइट. सो
then other rivers also come in, Banas, Chambal, Sindh, Betwa, Dasan, Ken, they all come up over here and they meet up Yamuna. Polluted water बढ़ जाता है, वो फिर सब गंगा में अपना ड्रेन ऑफ कर देती है. तो यमुना itself is also one of the major polluter of Ganga. Right? देखो मेजर बराजेस जो दिल्ली एनसीआर में, पहला वजीराबाद बराज स्टार्ट होता है नॉर्थ दिल्ली से, ड्रेन ऑफ करता है. फिर नजफगढ़ ड्रेन तो सबसे ज्यादा पोल्यूट करता है, बिकॉज यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द रेसिडेंशियल क्लस्टर्स दे आर अनऑर्गेनाइज्ड, दे हैव ओपन ड्रेन्स, दे ऑल कलेक्ट एंड ड्रेन इट ऑफ इन द मेजर बराज. राइट? जो नजफगढ़ बराज करता है, 40% ऑफ द टोटल पोल्यूशन लोड कम्स फ्रॉम नजफगढ़ बराज. राइट? वाटर क्वालिटी यहाँ पे देखो, नजफगढ़ बराज के पहले और बाद में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है, नील हो जाती है. टोटल कॉलीफॉर्म 1,10,000. आइडियल स्टेट क्या होना चाहिए, सेफ लेवल 4 का एटलीस्ट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होना चाहिए, 4 मिलीग्राम पर लीटर, और 5,000 के कॉलीफॉर्म्स होना चाहिए. सोचो कितना ज्यादा पोल्यूशन हम इसमें नजफगढ़ बराज से ही डाल देते हैं. देन इट गोज इनटू आईटीओ बराज. ये आईटीओ के पास एक बराज यमुना में ओपन होता है. देन ड्रेन्स ऑफ, देन ओखला बराज. यहां से बढ़ के कॉलीफॉर्म्स कितने जाते हैं, 1,10,000 से 2,40,000 आईटीओ के बराज. यहां तक आते आते ओखला बराज तक आते आते 15 लाख. ठीक है? निजामुद्दीन बराजेस तक एडिशनल 1,10,000 आर बीन एडेड. राइट? सब कुछ जाके शाहदरा ड्रेन में गिरता है, जो शाहदरा ड्रेन बाद में जाके यमुना में गिरता है. दिस ऑल बिकम्स द मोस्ट पोल्यूटेड पार्ट ऑफ द सिटी. राइट? नजफगढ़, सप्लीमेंट्री ड्रेन्स एंड द शाहदरा ड्रेन्स, दीज आर द मोस्ट पोल्यूटेड ड्रेन्स ऑफ यमुना, व्हिच ब्रिंग्स इन वाटर फ्रॉम नॉर्दर्न दिल्ली एंड ईस्टर्न दिल्ली, नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली इटसेल्फ. राइट? ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है. So to come up with the solutions under the National River Conservation Program itself, we started with Yamuna Action Plan. Right? This was the bilateral project between Government of India and Japan to clean up river Yamuna. 1993 में ही आया, जब गंगा एक्शन प्लान फेज 2 आया, तब यमुना एक्शन प्लान भी हमने लिया. It was one of the largest river restoration project in India, apart from गंगा एक्शन प्लान से भी बड़ा था उसमें. Right? It was entrusted under the National River Conservation Directorate, NRCP जो बना था उसके डायरेक्टरेट के अंदर it was brought in. Right? Ministry of Environment and Forest. At implementing project were Uttar Pradesh Jal Nigam, that was implementing, the Public Health Engineering Department in Haryana, the Delhi Jal Board, and the Municipal Corporation of Delhi. These were the party in the implementation of the projects for conservation of the river Yamuna. Right? The Japan Bank for International Cooperation has promised 17.7 billion yen for the overall project. Right? The basic idea was to come up with sewage treatment plants. Yamuna Action Plan, the sewerage and the non-sewerage, 2 plans were created under this. Interception and drainage plans were to be created. Main pumping stations were to be created, rising the basic main pumping stations, which will help in reducing the overall pumping up of the sewage. Right? Sewage treatment plants were to be brought in, and other ancillaries to be brought in to cut down the sewage. And the non-sewage, low-cost sanitation, crematoria, bathing ghats, afforestation, public participation were to be brought in under Yamuna Action Plan. Right? Under this, the interventions were not very high. Yamuna Action Plan is divided into 2 phases. Yamuna Action Plan 1, broadly 2 types of activities were taken up. Construction of 29 sewage treatment plants of about 728 million liters of the per day, and 58 pumping stations, and 179 kilometers of the sewers were proposed in Yamuna Action Plan 1. Then 1.128 public toilet complex, 96 crematorium, riverfront development was to be taken up. Right? It also included the construction of 5 mini sewage treatment plants and 10 micro sewage plants for the community level toilet complexes also. Didn't function. Right? In 2003, we came up with the Yamuna Action Plan 2. Plan 1, 93 से 2003, 2003 से onward, Yamuna Action Plan 3 आया. It was regarded as the core project under the National River Conservation Program, NRCP के अंदर ही आया. ठीक है? Was extended in 2003 to cover Uttar Pradesh and Haryana along with Delhi. अभी तक तो दिल्ली पे ही काम चल रहा था, दिल्ली वाले कर नहीं रहे थे, साथ में उत्तर प्रदेश और हरियाणा, वो बोल देते थे कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश वाले पोल्यूट ज्यादा कर रहे हैं, यमुना को हम तो कर रहे हैं. ठीक है? बट वो हुआ नहीं. Then project, the abatement of severe pollution river Yamuna was to be taken up. In Yamuna Action Plan 2, we addressed the abatement of increasing serious pollution, building and expanding the capacity of the old sewage treatment plants and laying resettling towers also. Then institutional capacity building for urban local bodies in each state, right? So as sewage treatment plants and toilets can be brought in over here, right? In Delhi, under the Yamuna Action Plan, in Delhi, Yamuna Action Plan 1993 to 2003 onward, still it is going on. Interceptor Sewer project was brought in 2006 in Delhi NCR for bringing in the cutoff of Najafgarh specifically, right? So that we can have covered drains and improvised sewer system. Nirmal Yamuna Revitalization Program was brought in 2017. And then the Namami Gange projects, which are there, which will also function over Yamuna because it is the tributary to Ganga. And the series of NGT judgment between 2015 and 19 has led towards various
improvements in the Yamuna pollution abatement, but not solve the problem. The problem still remains the same. Interceptor sewage project, which is brought down by government of Delhi in cooperation with Japan. Now Delhi and Japan trap sewage at the point of confluence of smaller drains and a larger drain like Najafgarh and convey the sewage through a trunk sewer line. This is a large scale project. Start ho gaya hai, partially it is being done, but abhi bhi the cut down is not being taken up. 57 stretch of the kilometers of the sewer lines are to be laid by micro tunneling and pipe jacking methods. Right? वो किया है, निजामुद्दीन के आसपास लोगों ने किया है, but still अभी नहीं हुआ. Right? The project was divided into 6 packages: Dwarka, then Nitholi, Keshopur, Rohni, Rithala, Shadra South, Najafgarh supplementary, and Shadra. These were the major drains which were taken up under Yamuna Action Plan. Right? But हुआ नहीं. 2017 में फिर जैसे गंगा एक्शन प्लान बना था, नमामि गंगे बना, वैसे ही 2017 में भी created मैली से निर्मल यमुना plan. Right? This is the last thing. National Green Tribunal on 2015 gave direction to clean river Yamuna, and under this, the Mali se Nirmal Yamuna came up in 2017. Right? The bench decided to constitute a principal committee which would be responsible for implementation of the major judgment. Kya judgment tha? Special Secretary of Ministry of Environment and Forest would be brought in, Joint Secretary of Water Resources, Chief Secretary of Delhi, Vice Chairman of DDA, Commissioners of all corporations, and the State Secretaries of Haryana, UP, Himachal Pradesh, and Uttarakhand are to come up with a committee so as to create a hard structure or a hardcore plan to clean off Yamuna. Right? Impose a 5,000 rupees fine on persons polluting the river itself. Right? Banning on dumping of construction material into Yamuna River, that has been brought in already 2016 में construction and demolition waste में भी cover हो गया था वो. Right? Restrain real estate developers from carry out any construction activity on the floodplains. वो सबसे ज्यादा हो रहा था क्योंकि Delhi NCR. Right? Directed states that Yamuna and its tributary flow come up with the action plan to ensure environmental flow and revive Yamuna stretch in Delhi. And 4,000 rupees are estimated by the expert committee to be made available up to 20,000 rupees. Initially 4,000 था, बाद में 20,000 rupees आ गया, और which was brought under the budget of Delhi. लेकिन वो सब कहाँ चला गया हम सबको पता है. Right? So ultimately अभी Yamuna Action Plan 3 has come up post 2017. उसको हमने Yamuna Action Plan 3 बोला. 17 निर्मल से मैली यमुना जब तक नहीं आया, फिर उसके बाद 17 से Yamuna Action Plan 3 जो फ्यूचरिस्टिक है. उसमें क्या लेंगे? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लेंगे, आयरन ग्रिल्स लेंगे, एनजीओस वुड बी ब्रॉट इन फॉर पब्लिक पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी लेवल टॉयलेट्स वुड बी क्रिएटेड, मोबाइल टॉयलेट वैन्स. वही प्लान है जो यमुना एक्शन प्लान चल रहा है. बहुत कोई हार्डकोर स्ट्रक्चर नहीं. हाँ, इंटरसेप्टर सीवर प्रोजेक्ट लाइंस जो आए हैं अभी, दैट इफ इज बीन डन, बेसिकली कर क्या रहे हैं? यमुना स्ट्रेच के पैरेलल एक सीवेज स्ट्रक्चर बना दो, पूरा सीवेज हटा दो दिल्ली से. ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे ले जाओ, ट्रीट कर लो, फिर उसके बाद दिल्ली से आगे ले जाकर उसको छोड़ो, तो दिल्ली में पूरा रिवर फ्रंट क्लीन हो जाएगा. ये बेसिक टारगेट है यमुना एक्शन प्लान 3. Right? 6-point strategy has been taken up by Delhi. Capacity of the sewage treatment plants improved. A common effluent treatment plant to be made functional and upgraded. Right? Increasing the household sewage connections also. Right? Collections, in fact. Reduce the sewage dumping directly into Yamuna. Institute treatment with new technologies in Najafgarh, Badarpur, Badshahpur, supplementary and Ghazipur drains specifically. Right? Sewage treatment at a higher rate would be created. Community toilets and desilting the overall sewer line systems that we have, because that overflow also lead towards the drain off into the river itself. So this has been taken up for the overall treatment of river Yamuna. Right? Introducing the Prelims Target course and Prelims Test Series at Prodigy IAS. Designed for UPSC Prelims 2026, this comprehensive program offers in-depth classes on history, geography, science and tech, environment, polity and governance, and economy. Stay updated with current affairs and sharpen your skills with our Prelims Test Series consisting of 50 full-length tests covering all subjects along with CSAT. Join Prodigy IAS and stay ahead.